अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 10 मार्च 2026 है और अभी रोज़ा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से हूँ। तो ये एक अपडेट वीडियो है जो कि अभी आजकल जो दुनिया के जो हालात हैं जो बिगड़ रहे हैं फिर से, और उसके बारे में सोचा मैं आपको बता दूँ। और बहरहाल मेरा रोज़ा है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ना ही मेरा मूड है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा जो आजकल जो कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है बात करना, ऐसा मुस्लिम और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं जी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है ना ईरान पर हमला करते हैं।
ببر. Hello, I'm Marianne Mashiri. You're watching BBC News with live coverage of our breaking news this hour. The United States and Israel have launched airstrikes across Iran. Explosions rocked multiple cities across Iran, including its capital, Tehran. Videos from Tehran show smoke. You see it here billowing over the city. We have breaking news on this special edition of What You Need to Know. Attack on Iran. The US and Israel launching a wide-scale assault on Tehran. Plumes of smoke seen rising in the capital. Let's just go back to our breaking news story that Israel has launched a preventative attack against Iran. That's according to Israel's defense minister.
Apparently, air raid sirens have been heard in Tel Aviv and Jerusalem. Witnesses say that they've also heard explosion in Iran's capital, Tehran. Sirens sounded in Israel as Israel warns of the possibility of missiles. That's the latest breaking news we're getting here. Let's just stay with this story and bring in Al Jazeera's Noor O'Day. She's in Ramallah for us in the occupied West Bank. Noor, just tell us what's going on in Israel at the moment. और वो हमला भी इसलिए किया जाता है अमेरिका के मुताबिक वो मिसाइल प्रोग्राम जो है ना ईरान का और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तबाह करने के लिए और दूसरा रिजीम चेंज करने के लिए वो हमला करता है. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why, but Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach.
This is the moment for action. Do not let it pass. बहरहाल इसराइल बदला लेने के लिए करता है और अल्लाह की लानत हो इसराइल और अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर अल्लाह की लानत और नेतन्याहू पर भी अल्लाह की लानत। और जो कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इनका एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो होता ये है कि 28 फरवरी 2026 को एक नई जंग शुरू हो जाती है, 2026 का ईरान वार जो कि अमेरिका और इसराइल के साथ है। और एस ऑफ नाउ आज तक 10 मार्च 2026 आज जो है ना ये जंग जारी है। और 28 फरवरी 2026 को जो है आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब को ये ज़ालिम जो है ये अमेरिका और इसराइल ये शहीद कर देते हैं उन्हें। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Welcome on in. And tonight at 6, we continue to follow big breaking news out of the Middle East. President Trump has just confirmed that Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is dead after the U.S. and Israel attacked Iran overnight. Now, we are getting information from Israeli sources that the Ayatollah is dead. This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. Again, we're going to go to Jeremy Diamond. Jeremy, the strikes coming this morning that were targeting senior leadership, that's what we knew, targeting senior leadership there in Iran. And now we can say from Israeli sources that the Ayatollah of Iran, the supreme leader, is dead. 86 साल की उम्र में वो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं झुके और वो उनके ख़िलाफ़ रहे और वो अपने कंपाउंड से भी नहीं थे हटे। उन्हें कई दफ़ा उन्हें ऑफ़र की गई थी आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब को कि वो अपने कंपाउंड से छोड़कर वो चले जाएं रशिया की तरफ चले जाएं या और भी उन्हें कहा गया था कि वो अंडरग्राउंड हो जाएं, लेकिन वो फिर भी वो नहीं हटे वहाँ से। उन्होंने वो डट कर मुकाबला करते रहे, वो अपने कंपाउंड से नहीं हटे। उन्हें पता था कि अमेरिका और इसराइल जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें हमला करने की। और जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऑलरेडी जो है ना ये जो लोकेशन जानता था आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब की, उस कंपाउंड में एग्जैक्ट लोकेशन जानता था, इसलिए उसने मिलकर नेतन्याहू से वहाँ पर हमला किया। तो वो तो शहीद हो गए। उन्होंने शहादत का मरतबा अपनाया रमज़ान में और 28 फरवरी जो कि रमज़ान था और अभी भी रमज़ान है, तो रमज़ान में उन्होंने शहादत का मरतबा लिया। और जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, तो वो जुल्म के आगे डटे रहे और वो पीछे नहीं हटे। तो बिल्कुल ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। तो मेरी सपोर्ट बिल्कुल ईरान के साथ है। मेरी आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ ईरान को। और ये भी खबर आई है कि जो है जब 1 मार्च 2026 को जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, तो एक प्राइमरी स्कूल के ऊपर इसने अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया ईरान के अंदर और वहाँ तकरीबन 200 बच्चों को उसने शहीद कर दिया अमेरिका और इसराइल ने। तो लानत हो अल्लाह की कि 200 मुसलमान बच्चों को टारगेट करते हैं। कभी फ़लस्तीन पर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कब से, और अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ जंग रोकी हुई है और अभी इनकी फ़ोकस इसराइल की और अमेरिका के भी ईरान की तरफ है। और वहाँ भी इन्होंने 200 बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अंदर शहीद कर दिया जो 28 फरवरी को अटैक हुआ था। 1 मार्च 2026 को कैसे कहते हैं प्रोटेस्ट होता है पूरे ईरान में और पूरी अवाम बाहर आती है और आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब की शहादत में और उन्हें जो शहीद कर दिया गया उसमें वो बाहर आके एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ और कहती है, ईरानी हुकूमत को कहती है कि बदला लेंगे अभी अमेरिका से और इसराइल से इसका।
फिर ये भी कि 28 फरवरी 2026 को आयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद करने से पहले उन्होंने यूएस के कई बेसिस पर उन्होंने जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, तब इन रिटेलिएशन में ईरान ने इसराइल के तेल अवीव कैपिटल में हमला किया। The city of Tel Aviv continues to be Iran's prime target, and there have been regular attacks. Early this morning, our cameraman here recorded these pictures of an incoming salvo being met by interceptor missiles. When it comes to shooting down the Iranian projectiles, Israeli claims of an 85% success rate are entirely plausible, but here is another deadly example of failure. These are two Israeli interceptors hunting for a target, which they do eventually lock onto, but miss. The big Iranian missile slammed into central Tel Aviv. In this residential city, civilian casualties were almost inevitable. In fact, the missile struck. और फिर यूएस के कई बेसेस जो हैं वो बहरीन, जॉर्डन, इराक, यूएई, सऊदी अरब, कतर में भी ये जो इन मुसलमान ममालिक हैं जो इन्होंने यूएस बेसेस को पाल के रखा हुआ है, वहाँ पर ईरान हमला करता है सारे यूएस बेसेस पर। Some missiles launching here in Abu Dhabi. Big shit. Quality bomber na padta banda na reject. Quality bomber na padta banda na reject. Red warning. Closet shelter. Shelter in place. Missile threat warning. Closet shelter. Shelter in place. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Oh my God! Quality bomber na padta banda na reject. Missile threat warning. Closet shelter. Some missiles launching here in Abu Dhabi. Big shit. ضربوا البحرين يا شباب، ضربوها قاعدة. إيران ضربتهم. Quality bomber na padta banda na reject. Quality bomber na padta banda na reject. किसी सिविलियन पर वो हमला, उनका कोई इरादा नहीं है हमला करने का ईरान का, ना ही वो मुसलमान मुल्कों को उनका इरादा है हमला करने का। सिर्फ यूएस बेसेस को वो तबाह करते हैं और अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान होता है। और अभी भी एज ऑफ टुडे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसराइल का और अमेरिका का ईरान की तरफ से। बहुत ही अच्छा हो रहा है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ ईरान को और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ईरान की मदद करे और ईरान ये फतह नसीब करे और जीत जाए। सारे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे मुसलमान मुल्क जितने भी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे ईरान की साइड दें और जो बाकी जो मुसलमान मुल्क हैं जो चुप बैठे हुए हैं
बेगैरती की वजह से मुझे समझ नहीं आती कि ये अमेरिका के बेसिस पता नहीं पाल के क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि ये तो सारे जालिम मुल्क हैं जो मुसलमान के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि 25 फरवरी 2026 को ये इंडिया का जो गधा है, ये जो मोदी जो है ये इसराइल में जाता है, नेतन्याहू से मुलाकात करता है और कलावा मारता है उसे। और वहाँ पर ये जो है ना फूलों की और आग की पूजा करने लग पड़ता है। वहाँ जब नेतन्याहू उसे बुलाता है, वहाँ पर ये मोदी क्या करता है, आग की और फूलों की वहाँ जो इसने सजाए होते हैं नेतन्याहू ने, यहूद के पता नहीं क्या कुछ हैं, वहाँ उनकी पूजा करने लग पड़ता है, वर्शिप करने लग पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ये मोदी कहता है कि ये जो इसराइल जो है ये इंडिया का फादर लैंड है और इंडिया जो है वो उनका अपना मदर लैंड है। They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests but also contributes to global stability and prosperity. आम इजराइल खाए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गोया के जो इसराइल जो है वो हस्बैंड है इंडिया का और इंडिया जो है वो वाइफ है इसराइल की, और बीच में जो बेटा जो है वो एब्स्टेन फाइल्स है। और जो एब्स्टेन फाइल्स की एक अलग ही कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि एब्स्टेन फाइल्स से फोकस डाइवर्ट करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये किया। इसके अलावा दोस्तों 1 मार्च 2026 को यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल जो है वो कंडेम करता है जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, और इन रिटेलिएशन जो ईरान ने इसराइल और अमेरिका के बेसिस पर हमला किया उन सबको कंडेम करता है। कहता है कि ये वो बिल्कुल बाय फोर्स, कोई भी मुल्क को बाय फोर्स ज़बरदस्ती हमला नहीं करना चाहिए। ये जो एग्रेशन जो अमेरिका और इसराइल ने अपनाया हुआ है, जो जुल्म का रास्ता जो इन्होंने अपनाया हुआ है। Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I will speak directly to 3 areas today: the principles, the facts, and the way out. First, the principles. The UN Charter provides the foundation for the maintenance of international peace and security. Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. That is why, since this morning, I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved
through peaceful means, including genuine dialogue and negotiations. Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. In Tehran, large explosions were reported in the district that includes the presidential palace and the compound of the supreme leader. Several high-ranking officials have reportedly been killed, including, according to Israeli sources, Iran's supreme leader Ali Khamenei, that I'm not in a position to confirm. Iran's airspace has been closed and the country is under a near-total internet blackout. The attacks have reportedly caused significant civilian casualties. According to Iranian media, an airstrike killed at least 85 people and injured many more at a girls' school in Minab, Hormozgan province, and the school in Tehran was also reportedly hit, causing 2 deaths. Mr. President, military action is expanding rapidly across the region, creating an increasingly volatile and unpredictable situation and heightening the risk of miscalculation. According to Israeli sources, 89 people have been injured in Iran's subsequent strikes on Israel, and there were also impacts in the occupied West Bank. Iran has announced that in reaction to US and Israeli airstrikes, it targeted US military assets in the region. These strikes have reportedly hit civilian areas and infrastructure in the countries that I have already mentioned. Indirect impact of falling debris was also reported in Lebanon and Syria. Most Gulf states successfully intercepted the Iranian strikes. However, the UAE reported that 1 civilian was killed by debris from an intercepted missile. In Iraq, there are reports of drone and missile attacks from both sides. There are also reports that Iran is closing the Strait of Hormuz for international shipping. Mr. President, the US and Israel attacks occurred following the 3rd round of indirect talks between the US and Iran, mediated by Oman. Preparations had been made for technical talks in Vienna next week, followed by a new round of political talks. I deeply regret that this opportunity of diplomacy has been squandered. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. I note that the US President has reportedly talked with leaders of Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. Iran's foreign minister has reportedly spoken to his counterparts in GCC countries and Iraq, and everything must be done to prevent a further escalation. To this end, I call on all member states to strictly uphold their obligations under international law, including the UN Charter, to respect and protect civilians in accordance with international humanitarian law, and to ensure nuclear safety. Let us act responsibly and together to pull the region and our world back from the brink. Thank you. इसके अलावा दोस्तों चाइना जो है ना वो कंडेम करता है अमेरिका को और इसराइल को भी और कहता है कि इसराइल को बिल्कुल डिसआर्म करना चाहिए कि वो ताकि वर्ल्ड वार 3 शुरू ना हो जाए। अब फिर से वर्ल्ड वार 3 का खतरा जो है ना मंडला रहा है पूरी दुनिया में। इसके अलावा दोस्तों 11 फरवरी 2026 को जो है ना प्रोटेस्ट होता है ईरान में, जहाँ पर सारे जो ऑलमोस्ट बहुत सारे ईरान के जो लोग हैं वो बाल एक आइडल जो है ना जो जिसका बाइबल में भी जिक्र है और कुरान में भी है इसका जिक्र, तो वो जो एक बुत है उसको वो जला देते हैं ईरान में और वहाँ पर वो ट्रम्प का फ़ोटो डालकर जलाते हैं। तो ट्रम्प जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ इससे, तो बहुत ही अच्छा हुआ।
इसके अलावा दोस्तों जो इस ट्रम्प ने जो 22 जनवरी 2026 को जो इसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसने अभी रिसेंटली बनाई है, उस पर लानत हो। वो बोर्ड ऑफ पीस अमन के लिए बनाता है और गज़ा के अमन के लिए भी और बाकी मुल्क के अमन के लिए भी, और उल्टा इसका फिर 1 महीना ही सिर्फ अभी गुजरा है और 28 फरवरी को ये ईरान के साथ जंग छेड़ देता है। तो ये बिल्कुल अमन के काबिल नहीं है, इस पर अल्लाह की लानत हो, और ये अमन के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इसका बोर्ड ऑफ पीस जाए हाथ में और कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अमन की बातें करता है ये, लेकिन उल्टा ये तो फसाद की जड़ है। हर जगह ये जंग ही जंग फैला रहा है, हर जगह ये हमला करता है मुल्कों पर। इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि इसने ये भी यूनाइटेड नेशंस को इसने धमकी दी थी कि यूनाइटेड नेशंस को ये ख़त्म कर देगा, और बदले में इसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था 22 जनवरी 2026 को। तो इसका बोर्ड ऑफ पीस कोई काम का नहीं है, अमन की बातें ये करता है, बोर्ड अमन के बनाता है, लेकिन जंग करता है ईरान के ख़िलाफ़ और इसराइल के साथ वो भी मिलकर, और इसने कोई गज़ा के अंदर तब्दीली नहीं लाई। अभी तक भी ये जंग जारी है गज़ा के अंदर भी, और मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है 2023 से जो इसराइल की वजह से शुरू हुआ है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। और इसके अलावा दोस्तों 2 मार्च 2026 को रिसेंटली हिजबुल्ला जो है वो इस जंग में शामिल हो जाता है और इसराइल के खिलाफ हमला करता है, जो कि बहुत ही ठीक करता है, बहुत ही अच्छा उसने किया। वो एक एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, लिबनान जो मुल्क है उसका मुसलमान मुल्क है, और अच्छा ही हुआ कि इसराइल के खिलाफ जंग करता है। मैं तो कहता हूँ कि सारे मुसलमान मुल्क जो है ना इसराइल के खिलाफ हमला करें। और मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान जो है ये बेगैरती से अब तक भी ट्रम्प की सपोर्ट में और चुप करके बैठा हुआ था, ईरान की उसने मदद नहीं की, जो शहबाज शरीफ है। बहुत ही बुरा ये जो है ना, इसको कोई शर्म नहीं आती, और ये बिल्कुल जैसे पिछली बार की तरह ट्रम्प की सपोर्ट कर रहा था। आज भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया अमेरिका के ख़िलाफ़, और इसराइल के खिलाफ इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो पाकिस्तान पर भी जो है ना जो बहुत ही बुरा हालात हैं, और मैं बिल्कुल पाकिस्तान को भी कंडेम करता हूँ। इवन खुद मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ऑब्वियसली ये सच का साथ नहीं दे रहे। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो रोज़ा रखा हुआ है तो मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 12 मार्च 2026 है, और मैं आपको 10 मार्च 2026 को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये आपको बताना भूल गया था कि जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब जो हैं उनकी शहादत पर जो है उनकी हुकूमत ने 40 दिन का मॉर्निंग पीरियड जो है ना ऐलान कर दिया, यानी सोग मनाने के दिन ऐलान कर दिए हैं। पूरे 40 दिन तक जो है ना उनका सोग मनाया जाएगा, और जो कि 1 मार्च को आई थिंक शुरू हुआ था, और आज को जो कि 12 मार्च है, और ये 9 या 10 अप्रैल तक उनका जो है ना ये सोग मनाने के दिन जो है ना रहेंगे। और मैं भी बहुत परेशान हुआ था, और मुझे तो अचानक एक झटका सा लगा था जब मैंने उनकी शहादत के बारे में सुना। वो इस दुनिया में नहीं रहे, और अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा हैं, तो शहीद हो गए। और ज़ाहिर सी बात है, अब सब ने उन पर उम्मीद लगाई थी कि वो लीड करेंगे, लीड कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो शहीद हो गए। तो मैं भी उनके साथ जो है ईरानियों के साथ में भी बराबर का मैं शामिल होना चाहता हूँ उनके सोग में। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई थी कि जो मुश्तबा ख़ामेनी साहब जो हैं, जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब के जो बेटे थे सुप्रीम लीडर के, वो अभी नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ऐलान हो गया कि वो नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। और मजलिस खुबरगान हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुश्तबा ख़ामेनी रहबर अजीज मा वली फकीह मा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यार इमाम ज़मान, यार इमाम ज़मान, آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری
به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می‌نماید. مردم ما یه شعاری رو همیشه میدادیم، ماشاءالله. بهت فرو رفته است. به بیعت با رهبری و رهبر معظم انقلاب اسلامی ماست. به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. This is the moment Mujtaba Khamenei, the 56-year-old son of Iran's late supreme leader, is announced as the country's new leader. Supporters say they see his father in him. In a widely circulated message by several state-aligned outlets, a slogan read, "God revealed his hand and Khamenei just got younger," portraying Mujtaba's rise as a continuation of his father's rule. Iranian clerics have named Mujtaba Khamenei as the country's new supreme leader and successor to his father, who was killed on the opening day of the US-Israeli war. There has been no word yet from him. There are reports that he was injured in the strike that killed his father. Iran naming its new supreme leader, Mujtaba Khamenei. He's the son of the late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. ट्रम्प की खबर आई है कि वो हिलाफ है और वो कहता है कि वो सुप्रीम लीडर भी ईरान को वो खुद चुनेगा और जो है वो उनका जो बेटा है आयतुल्लाह अली खामेनी साहब का जो बेटा है मुज्तबा अली खामेनी साहब जो हैं वो जो कि सुप्रीम लीडर बन गए हैं, ईरान ने ऐलान कर दिया है। और ट्रम्प जो है उनके बेटे के खिलाफ है, मुज्तबा अली खामेनी साहब के खिलाफ है, कहता है कि वो उनके बेटे को वो एक सुप्रीम लीडर की तरह नहीं ले सकता। Have to take him out? Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be in Iran? Well, with I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. You've said you have someone in mind to be the new Iranian leadership, if not the Ayatollah's son. What are you looking for in that person? Are you looking at someone internal, given that you just said that their leadership has been decimated? I like the idea of, internal and eternal, come to think of it. But I like the idea of internal because it works well. I mean, I think we've proven that so far. You have called him an unacceptable choice. So does he have a target on his back? How can you say I don't want to say whether or not he does because that would be inappropriate. तो जो वजह जो भी हो, लेकिन ट्रम्प का कोई काम नहीं बनता कि वो बीच में दखल करे। वो तो ऑलरेडी एक जुल्माना हरकत कर रहा है और लानत हो ट्रम्प पर और अल्लाह ताला ट्रम्प की फिरौनियत को ट्रम्प को अल्लाह ताला घर कर दे, उसकी जुल्म को अल्लाह हाथ में मिला दे, ख़त्म कर दे और इसराइल को भी अल्लाह घर कर दे। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको बताना था कि जो है ये सब इनका प्रोपेगेंडा है, इल्यूमिनाती का ये प्रोपेगेंडा है। आप तो जानते हैं कि जो अमेरिका का जो ग्रेट सील जो है ना, ग्रेट सील ऑफ यूएसए जो है, उसमें जो फ़ोटो जो है, उसमें जो ईगल का फ़ोटो है, उसकी अगर वो जो कॉइन है उसकी पिछली तरफ अगर आप देखें, अगर फ्लिप करें ना अमेरिका की पिछली साइड, जो ग्रेट सील ऑफ अमेरिका की पिछली साइड अगर आप देखें तो वो इल्यूमिनाती का एक द ग्रेट आई, वो जो आई का जो एक फ़ोटो है ना पिरामिड के साथ, वो वाला फ़ोटो है अमेरिका का। तो यानी 1776 में अमेरिका बनाई इसलिए गया था, अमेरिका को बनाया ही इसलिए गया था कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लीड करे, पूरी दुनिया में वो हुकूमत करे, जो कि वो कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। और इवन जो जैसे आप जानते हैं यूएस डॉलर्स अभी पूरा लाइक पावर में है, फिर उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो भी पावर में है, उनकी न्यूज़ पावर्स में है, उनकी मूवीज़, उनका सारा कुछ पावर में है। तो ये अमेरिका खुद ही एक बहुत ही बड़ा फितना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब करे और अमेरिका को हरा दे, अमेरिका का दी एंड कर दे अल्लाह ताला और उसको फिरौन की तरह घर कर दे। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान जीत जाएगा इंशाल्लाह और मेरी पूरी दुआएं ईरान के साथ हैं कि ईरान जीत जाए जंग। तो अल्लाह हाफिज़।